देखो कैन नॉट कनेक्ट वही लिखा था। मोबाइल्स। हेलो। तो आज का ये जो एनआईआईटी का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीके शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर के उद्बोधन के पश्चात हम लोग सीधे कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो मैं सर का स्वागत करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम, और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन और उसके लिए मार्गदर्शन दें। प्लीज सर।
आपको एक कोर्स में फिक्स नहीं है, आपको फिक्स करना है, विशेषकर आप भाषा की ज्ञान आदि और अच्छे से अगर आपका कोई भी एक भाषा पे आपका कमाल लिखना चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपका एक्सपर्टाइज है तो आपको मेरे ख्याल में आज की तारीख में 30-50 हज़ार हर चीज में आज आपको आधार का काम है, लेकिन चीज क्या आप जा रहे हैं आपके पास आइडिया है ऐसा है जो वर्ड आपको किसको आता है जिसको क्या है सभी हमारी बात आप किसी एक भी को भी पकड़ लेते मानता हूँ कि किसी का प्रोग्राम है लेकिन इतना ज़्यादा और क्लासेस आपको ऑनलाइन और उसके बाद ये किसी कारण से गाड़ी आप और सीखने के बाद जब आप हमारी कोशिश गौरी कॉम्पिटिटिव कई सारी और वो बेसिकली कितना नॉलेज का आ गया कि आप और जब भी आपको होगी विशेष करके ट्राइबल स्टडीज सेंटर को और आने वाले समय में हम लार्ज स्केल में आ रहे हैं अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ताकि नेक्स्ट जब वो तो हमें सिलेक्शन करना है और आपको फिर आनी चाहिए उसको ये से जब आईडी पर हम हाँ हमारे साथ हुआ लगभग 5,000
आपको बड़े प्लेसमेंट में आने पड़ेंगे। वही वैसा नहीं है कि आप ध्यान कहीं से भी पता नहीं सब कौन सा ध्यान कौन सी बात आप थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय आपके लिए उन्होंने यहाँ पर निकाला और वो यहाँ पर आए। इनके लिए पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और सर को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ही उनके रीजनल मैनेजर का फ़ोन आया था एंड ही वाज ऑफरिंग 10 मोर कोर्सेज और इवन दे सेड कि हम 10th आपके 5,000 6,000 बच्चों को भी वो एक साथ करा सकते हैं। उसके लिए फिर मैंने कहा कि हम उसके लिए एक्चुअली उनको कोई डेटा फॉर्मेट चाहिए, उसमें बच्चों का डेटा चाहिए। मैंने कहा वो फिर अगले सेशन में ही देखेंगे। तो 10 और कोर्सेज इसके अलावा भी आपको फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं और वो कोर्सेज काफ़ी आपके जीवन के लिए उपयोगी होंगे, जिसमें साइबर सिक्योरिटी वगैरह इस तरह के कोर्सेज है। इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स है और ये तो कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कंप्यूटर का ही है। वर्तमान समय भी कंप्यूटर का ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसके बिना आप लोग इलिटरेट ही कहलाओगे एक तरीके से। भले ही आपने बीए एमए कर ली, लेकिन आप कंप्यूटर का यूज करना नहीं जानते, आप ईमेल्स के डिफरेंट फंक्शंस नहीं जानते हैं, गूगल ड्राइव्स के फंक्शन नहीं जानते हैं, या फिर पावर पॉइंट जिस तरह का आप ये स्लाइड देख रहे हैं, किस तरह से एक डिजाइन बनाया जाता है, ये बहुत सिंपल सा काम है। इट्स नॉट टफ। ये मतलब कोई कठिन काम नहीं है। अब आप जैसे जिसमें ये जो एनिमेशन है, ये खुलना, ये बंद होना, ये चीजें चेंज होना, दे आर ऑल, ये बहुत आसान है, सिर्फ सीखने की जरूरत पड़ती है। ये हम लोग भी अपने आप ही सीख गए, किसी ने हमको नहीं सिखाया, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी चीज है। लेकिन ये सामान्य सी चीज भी हमको ऐसा डिफिकल्ट लगती है कि इसको कैसे बनाया होगा। और फिर आपकी क्रिएटिविटी जब आपके नॉलेज के साथ मिल जाती है तो फिर चीजें बहुत सुंदरतम रूप में आपके सामने आती है। तो ये सब चीजें सीखना और आप लोगों को सिखाना हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हमने इस कोर्स का आयोजन किया है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। केवल यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठना है, बट सीरियसली आपको कोशिश करनी है कि हम कुछ चीजें सीख पाए। ठीक है, तो अब हम लोग मैं सर को बोल देता हूँ, वो वहां से आपके लिए ऑनलाइन शुरू कर देंगे। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट हमारा बड़ा दिक्कत वाला काम है। ये यहाँ इससे कनेक्ट नहीं हो रहा सर, ये सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा। लैन उसको बुलाया था, वो आया ही नहीं। मैंने कहा लैन स्विच डाल दे यहाँ पे, तो लैन से कर देते हम। Am I audible, sir? यस सर। Okay. So very welcome to all. और स्पेशली थैंक्स टू प्रिंसिपल सर और महेंद्र जी सर, आपने इस कोर्स के लिए हमें परमिशन दी कॉलेज प्रीमाइसेस में करने के लिए। तो हमारा जो कोर्स है उसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल एम्पावरमेंट। कोर्स बेसिक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं वही हम आपको सिखाएंगे। लाइक बिल्स, ऑनलाइन बिल पे करना, ऑनलाइन रिजर्वेशन, यूज सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, गवर्नमेंट बेनिफिट पॉलिसीज ऑनलाइन वगैरह वगैरह। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसके अलावा बहुत सारे हैं, वो सब चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे। साथ में हम जीमेल, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है और जीमेल क्या है वो तक नहीं पता। लास्ट 2 डेज में मैंने खुद ने फील किया कि जो मेरे पास जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कई सारे बच्चे, उनको ये नहीं पता कि उन्हें जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उन्होंने लिख तो दिया इसमें जीमेल यू करके, बट वो जीमेल क्या है उनको नहीं पता। तो हम वही सब चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। कोर्स में डिटेल क्या क्या बताएंगे मैं आपको बता देता हूँ।
अपनी स्क्रीन के साथ में। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। ओके, तो हम इस कोर्स में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। जो हमारा कोर्स है 20 दिन का है, यानी कि 20 घंटे का कोर्स है हमारा, जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में, ईमेल, सोशल मीडिया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एडिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्टिविटी ऑन कट कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस, ठीक है, फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग, वे सब चीजें हम यहाँ करेंगे। उसके बाद एक्सेल है, एक्सेल वर्कशीट, पेज लेआउट है, चार प्रिपेयरिंग चार्ट एक्सेल है, ठीक है, फॉर्मूला कैसा लगाता है एक्सेल में, ये सब चीजें हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। साथ में ही हम पीपीटी कैसे बनाते हैं, जिस सर ने बनाई हुई है पीपीटी, वही सब हम ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो आज हम पहले हम एक नॉर्मल वीडियो में आपको प्रेजेंट करता हूँ। आई थिंक सो आपको ज्यादा समझ में आएगा उस वीडियो से कि हम क्या क्या करेंगे आगे और क्या क्या काम आने वाली चीजें। बाकी कंप्यूटर आपको पता ही है, आप सभी जगह जाते हैं, वहां पे आपका कंप्यूटर आपको सबसे पहले मैंडेटरी हो चुका है आजकल। मैं एक वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। सर वीडियो की वॉइस आ रही है क्या? लैग कर रही है। ओके, अब क्लियर है? नहीं। Hi, my name is Ram. I have a hard time traveling so far to pay bills. Yes, of course. You can pay your electricity bills from here itself without having to go so far. Is it? That would be so helpful. Can you also provide information about the market price of crops from the computer? Yes, of course. With internet connected to the computer, I can provide you all the information about the current price of crops in the market. That's amazing. Can we get all these services in the village itself? Yes, with internet connection, you can get all sorts of information right from the village itself. I have heard that nowadays the internet is also available in mobile phones. Is it true? Yes, Rohan. Not only mobile phones. Nowadays, many people use tablets or smartphones with internet connections for multiple purposes. It sounds really interesting.
तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इंटरनेट के बारे में कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ठीक है? कि हम इंटरनेट के थ्रू क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। आगे-आगे बताता जाऊँगा, मैं आपको इसी के साथ में एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या-क्या कर सकते हैं। Can you tell me more about computers, iPhones and tablets? Sure. I will tell you more about computers, smartphones and tablets. Please sit down here so that I can tell you more about these digital devices. First of all, let's learn what a computer is. A computer is an electronic device used to store and process data and information. What can we do with a computer? Through a computer, you can connect with your family and friends living miles away, store information, book railway tickets, access bank accounts, play games, listen to music, and watch movies. Now let's learn about तो आप इसमें बताया कि कंप्यूटर से आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। how to part of a computer. A computer is divided into parts, hardware and software. The computer and all the equipment connected to it are called. ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, सीडी, डीवीडी, प्रिंटर, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, लाइट पेन, मॉडेम, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, बट हमें बहुत सी बार हम इस सब से क्या हमें क्या करना है, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इस सब के इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सी चीज़ क्या काम आ जाए, ठीक है? आपने देखा ज़रूर होगा, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, कॉलेज में पढ़ते हैं तो। Software is a set of instructions perform tasks. All those icons are software. Yes, so software is a program perform basic tasks. Let's learn about the different devices that use the computer. Computer consists of three different components: input devices, processing devices, and output devices. Input devices, just like a tractor of petrol to run on. Similarly, a computer uses devices to insert data, instructions, or information so that it can perform tasks. Devices which are used to insert data, instructions, or information into a computer are called input devices. Look at these images. They are some of the input devices used in the computer. These ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं, सीडी, डीवीडी, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव। are pen drive, mouse, keyboard, and microphone. Keyboard and mouse are primary input devices. It looks very similar to tablet keyboard with an exception to addition is in it. Yes, besides the regular key, it also has a music pad and some special. Can you tell me what the special keys are for? The numeric pad helps you to enter numbers with the keypad similar to a calculator. These are the navigational keys. They help you to view a page on the monitor. The page of keys moves the cursor and visible section of the text up on the screen in program. The page down moves the cursor and visible section of text on the screen down in program. Home key moves the cursor to the beginning of the document. The end key moves the cursor to the end line of the text in the program. Editing keys. These three keys are called editing keys. They help in editing text documents on the computer. The insert button toggles between inserting text and
overwriting text in most of the text editing programs. The delete button deletes the single character of text to the right in text editing programs. The backspace key deletes the single character of the text to the left in text editing programs. So these four arrow keys, four arrow keys are called directional keys. The up arrow keeps the cursor up in text editing programs. The down arrow keeps the cursor down in text editing programs. The left arrow keeps the cursor left in text editing programs. And the right arrow keeps the cursor right in text editing programs. Do you see the keys from F1 to F12? They are called the functional keys. These keys perform specific assigned functions depending on what program is active. The escape key terminates the currently active process in most programs. The control and alt keys are function modifier keys that change or enhance specific actions and non-functions in those programs. The Windows key activates the Windows Start menu, which is the same as clicking the Start button on the taskbar. So far, we have learned about the various keys in the keyboard. Let's now learn about the mouse. A mouse is a pointing device. It is used to point to and interact with items on the computer screen. As soon as the mouse is moved, you will notice a small arrow moving on the screen in the same direction with the movement of the mouse. This arrow is called the pointer. The pointer can provide data or instructions to the computer for processing. A mouse has two buttons, left and right. It also includes a scroll wheel between the two buttons that helps you to move between documents and web pages more easily. These are some of the functions that a mouse performs. Clicking the left button once selects the certain program on the screen. By double-clicking the left button on the mouse twice in rapid succession will direct you inside the selected program. Clicking the right button on the mouse will open the index menu. The scroll wheel helps us to move up or down a page on the screen. Processing devices. Using grinding wheels to separate the husks from the grain or the crushed grain to make serve as a processing machine. Similarly, devices which control the storing and taking of information in a computer are processing devices. The information is processed by the computer processor or CPU and then feeds that information to the computer memory or RAM. Output devices. Just like using threshers to separate the straw from the grain or trace it as an output machine, similarly, the devices which we use with the computer to display the results are called output devices. Monitor is the most common output device. Monitor is a screen used to display the output such as words, numbers, and graphics. Monitors are of two types: chessboard radios, CRT, and flat panel displays. A printer takes the processed data from the computer called soft copy and generates a hard copy of the same. Soft copy is an image or text file saved on a computer, whereas a hard copy is a printed version of the same. There are three types of printers. Inkjet printers. जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंटर, हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है, और वही हम उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, हार्ड कॉपी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इंकजेट है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है। ये प्रिंटर आपको पोस्ट ऑफिस में जाओगे वहां देखने मिल जाएगा आपको,
पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई ऑफिस वगैरह हो गया, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेजर प्रिंटर आपको ऑलमोस्ट सभी जगह मिल जाएगा। और इंकजेट, आप फोटो वगैरह प्रिंट निकलवाते हो तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर रहता है। ठीक है। Is printer a big printer? A printer is an output device to print your sound. Without a speaker, you will not be able to listen to music, your remote control text, etc. Headphones give sound output from the computer. They are similar to speakers except that they are worn on the ear so that only one person can hear the output at a time. Projector is an output device with which a text or an image is projected onto a flat screen. A projector is often used in meetings or to make presentations. It allows the display to be visible to many people. So far, we have learned about various input, processing, and output devices. Let's now take part in this fun activity. Click the correct option for each question. That's right. Well done. That's right. Well done. That's right. Well done. That's right. Well done. Keeping lots of important things in mind, so a computer stores data in what is called a computer memory. A computer has two types of memory: primary or main memory and secondary memory. The main or primary memory is very fast. It is called RAM, which means random access memory or RAM. The speed of the computer depends on the RAM. Data and instructions are stored in the main memory from where it can be retrieved from central processing unit or CPU for processing the time. जैसे कि रैम रोम आप सबको पता ही है, आप आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, इसमें आपको, आप जब फोन लेने जाते हैं तो शॉप से ही पूछते हैं कि भैया रैम कितनी है। रैम और रोम, आजकल आप देखते हो कि रैम से स्पीड जो होती है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम कम रैम का लेंगे तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी स्लो रहेगी। तो बस यही है। रैम है उससे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आती है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB। रोम है वो 80 GB से स्टार्ट होती है। ठीक है। और फोन में 64 स्टार्ट होती है। Cache memory is a memory that is a part of RAM and is very near to the program. It is used to improve processing speed. The primary memory is limited, so to unlimited data, we use secondary memory. Any data or program that is kept in secondary memory has to be copied by RAM because the computer cannot process data directly on secondary memory. These are some of the devices that serve as secondary memory: pen drive, hard disk, and DVD. So how does the computer store data in its memory? Computer stores all information in just two digits, 0 and 1. A single binary digit, that is a 1 or a 0, is called a bit. A group of 8 bits is called a byte. Look at this table. It shows the relationship between bits and bytes. The instructions that are used to control hardware and accomplish tasks are called software. Software programs are planned step-by-step set of instructions that direct the computer what to do and how to do. There are two types of software: application software and system software. Application
Automation software is a program that helps the user to perform a specific job in the computer. Microsoft Word and OpenOffice Draw are examples of application software. The programs that are directly related to the computer hardware are called system software. To run a computer, you need an operating system, which is a system software. Let's now take part in this fun activity. Click the correct option for each question. That's right. Well done. That's right. Definitely, Uncle. I will explain everything to you. First, let me introduce you to the various parts of the computer. This is the monitor. It is like a TV and is used to display the output on the screen. This is the system unit box. It contains the central processing unit or CPU. The CPU is the brain of the computer. These are the keyboard and the mouse. They both are input devices by which we enter data into the computer. To connect the computer, first place the computer on the desk. Then, set the system unit next to the monitor. Look at the rear portion of the system unit. It has all the connection slots for connecting various devices. Now, this is how you can connect the monitor to the system unit. The video port of the system unit is called VGA port. Connect one end of the VGA cable to the video port of the system unit and the other end to the monitor. A keyboard comes with either of two types of connectors, PS2 connector or USB connector. To connect the keyboard to the system unit, plug the provided connector to the port in the system unit. A computer mouse comes with three different models of connectors, PS2 connector, USB connector, or serial connector. To connect the mouse, just insert the connector provided to the appropriate port in the system unit. Similarly, if you wish to connect the printer to the computer, just insert the provided connector which may be of one of two types, parallel port or USB port to the system unit. Thank you, Peter. Now, how should we connect the computer to the main electric board? Simple. A desktop computer comes with two power supply cables. First, plug one power supply cable in the power supply plug in the system unit and plug the other cable to the power supply port in the monitor. After that, plug both the cables to the power plug in the switchboard or the UPS provided. You can now use the computer. Can you show us how to switch on the computer? Sure, just follow these steps to switch on the computer. First, switch on the power supply of both. ये कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में आपको मैं कल वहां पर आके और डिटेल बता दूंगा इस कोर्स इस कंटेंट को लेकर. The system unit and the monitor. Then, press the power button of the system unit and then switch on the monitor by pressing its power button. Now, wait for some moments. Look, the display is appearing on the monitor. This is the boot screen. Slowly, you can see that all the software are loaded. Now the computer is ready to use. Thank you, Peter. For the first time, I have seen a computer and have now also learned how to switch it on. Yes, thanks, Didi, for telling us all about the computer. Now, can you also teach me more about mobile phones and tablets? Sure, Rohan. I will show you how to operate a mobile phone or a tablet. Hey, even I want to learn about devices. Okay, let's take a look at various components, functions, and applications of mobile phones and tablets. As you are aware, a basic mobile phone is a device by which you can make and receive calls, send and receive text messages, etc.
Modern mobile phones have lots of additional features such as web browsers, games, cameras, video players, and navigational systems too. These phones are called smartphones. Some mobile phones can be fitted with two SIM cards too. They are called dual SIM phones. Look at the various parts of a mobile phone. Geeta, can you show me how to insert a SIM card and battery into a mobile phone? Definitely, uncle. Just follow the steps. First, switch the phone off and then remove the back cover. After that, if the battery is in the phone, take it out. Then, insert the SIM into the SIM slot. After that, put back the battery in the phone. At last, replace the back cover and restart the phone. Thank you, Geeta. I also face problems when charging the phone's battery. Don't worry. Just कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर वे में होंगी। उसमें आज थोड़े वीडियोस हैं मेरे पास, मैं कल आपके वहाँ प्रॉपर वे में आके आपको क्लासेस बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, हाउ टू सेंड मेल, हाउ टू यूज गूगल पे, हाउ टू यूज फोन पे, हाउ टू रेल टिकट बुकिंग, ठीक है। तो इन सब के बारे में सीखेंगे। देन हम हमारा जो कंटेंट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, वो कवर करेंगे। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है आपको सबको देख के कि आप सब लोग बोर हो रहे हैं। आई थिंक सो। ऐसा नहीं है कि आप लोग जबरदस्ती कोर्स लिए। कोर्स को बताया था आपको मैं, कोर्स जो 20 डेज का है, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। तो आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंप्यूटर सेंटर्स होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स कराएगा, देन आपको ऐसा सर्टिफिकेट देगा जो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा, ठीक है। हमारे पास सर ने बताया था 10 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं जो आपको आगे भी फर्दर काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि चलो जस्ट टाइम पास के लिए कोर्स कर लिया, फॉर्म भर लिया, ये सब चीज नहीं होंगी। प्रॉपर वे में आपको सिखाया जाएगा, और आई एम श्योर कि आपको इस कोर्स को करने के बाद में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती, वो आप सीख जाओगे। और साथ में आपको, हमारे पास जब भी जॉब आएगी तो हम आपको जॉब के बारे में बताएंगे। आप इस कोर्स को करने से कम 15 से 20 हजार तक की जॉब के लिए, आप कहीं पे भी जाओगे आपको 15 से 20 हजार की जॉब कोई भी दे देगा ये कोर्स करने के बाद में। जस्ट मिनट, मेरे पास एक जॉब आई, बताता हूँ आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करके। रिसेंटली मेरे पास जॉब आई है एक, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ठीक है। ये जॉब है हमारे पास, रिसेंटली अभी आई हुई है। अगर कोई चाहे तो मुझे अपना सीवी शेयर कर सकता है। कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे सीवी शेयर कर सकते हैं। जो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें डिटेल दे रखी है।
Sure, Uncle. I am here to help and guide you. देखो बेटा, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं फसलों की मौजूदा कीमत पता करने के लिए अक्सर शहर को जाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे शहर जाने के लिए रेल की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना टाइम दिया, कीमती टाइम। और कल से आप लोग 1:30 बजे यहाँ पर अवेलेबल रहें। मैं आपको वहाँ पर आके ही क्लासेस, आगे की जो क्लासेस होंगी वो वहाँ पर आके ही हम इसको कंडक्ट करेंगे। और अपने साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें पास में, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको राइट डाउन कराऊंगा जो आपको करनी है। नोट डाउन कर लेना आपको, ठीक है? जो आपके लिए शॉर्टकट की वगैरह होंगी जो आपको काम लगेंगी। या श्योर, अभी आप लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, बट आगे भी आप उसको अपने पास रखें। तो थैंक यू सो मच। और कल आप सब लोग आए इसी इसी टाइम पे 1:30 बजे जो आ जाएं इसी क्लासरूम में। मैं आपको वहां पर आके पढ़ाऊंगा। तो आपके कुछ डाउट्स, क्वेरी वगैरह रहेंगे वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। अभी आपके क्वेश्चंस हैं बट मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। तो मैं आपके कल वहीं पे आगे आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरी है वो वहां पे आके आकर ही रिजॉल्व कर देंगे हम, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया।